Dear students, welcome back. This is our 8th lecture as far as carbonyl compounds are concerned. From here, we will start named reactions of carbonyl compounds. Named reactions. Let us start with named reactions. Myself, Rakesh Singh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College, Jammu and Kashmir. Now, reaction with alkalis. In reaction with alkalis, we will study one named reaction, that is aldol condensation. Let us start with aldol condensation and acidity of alpha hydrogen. Acidity of alpha hydrogen. The carbon atom attached to carbonyl group. The carbon atom attached to carbonyl group. This is carbonyl group. It may be aldehyde, it may be ketone. Is called as alpha carbon. This is alpha. And the hydrogen atoms attached to it are called alpha hydrogen atoms. Acidity of alpha hydrogen atom can be explained as first, due to electron withdrawing effect of the carbonyl group के electron withdrawing effect की वजह से the carbon atom, that is alpha carbon atom, become electronically deficient. The alpha carbon atom, being electronically deficient, in turn withdraw electron from alpha hydrogen from this bond, C alpha H bond. इससे electron withdraw करेगा. As a result, electron density on hydrogen atom decreases. Hence, alpha hydrogen atom acquire partial positive charge. These atoms acquire partial positive charge, thus become acidic. So we can say, due to minus I effect of the carbonyl group, the alpha hydrogen atoms in case of aldehydes and ketones are acidic in. Moreover, when alpha hydrogen atom is removed by strong base, जब alpha hydrogen atom को strong base remove करेगा, it result in formation of a carbanion which is resonance stable. This is very important. When this H is removed by strong base, OH negative जब इसको remove करेगा, being acidic, it result in formation of carbanion which is stabilized by resonance. So stability of this carbanion also ensures that H is removed as H positive easily. So acidity of alpha hydrogen may be attributed to minus I effect of the carbonyl group as well as to stability of the carbanion. अगर प्रोडक्ट स्टेबल है आसानी से बनेगा, अगर वो आसानी से बनेगा तो H पॉजिटिव भी आसानी से निकलेगा. तो H पॉजिटिव आसानी से निकलेगा मीन it is acidic in nature. Its acidity is being enhanced. Stability of product is also helping to removal of this H as H product stability. How product is stable? Because of resonance. We can say that it must be noted that acidity of alpha hydrogen is partly due to minus I effect of carbonyl group and partly due to resonance stabilization of resulting carbonyl. Product stability also matters. This is a very important point. This is being so here the reaction has been written. This is the reaction which I am talking of. Due to minus I effect of the carbonyl group के minus I effect की वजह से this carbon, alpha carbon, acquire charge, electron density decrease. It in turn withdraw electron from CH bond, thus making this hydrogen acidic, and it can be easily abstracted by the strong base, resulting in formation of resonance stabilized carbon. So hence, acidity of alpha hydrogen is partly due to minus I effect of carbonyl group and partly due to resonance stabilization of resulting carbonyl. Next, we have aldol condensation. So we explain why the alpha hydrogen is acidic in nature, and due to acidic nature of alpha hydrogen, there is aldol reaction. What is aldol condensation? Very important reaction. When aldehydes and ketones having alpha hydrogen are treated with dilute alkali. This is very important.
two molecule of such compounds condense to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy. If we take aldehyde, we get beta hydroxyaldehyde. If we take ketone, we get beta hydroxy, क्या बच्चे, बीटा हाइड्रोक्सी. ये देखिए हुआ क्या. जैसा कि मैंने बताया, जैसे एस्टल्डिहाइड लिख के बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक. What happens? This OH negative will remove this H positive. This result in formation of carbonyl, which will attack on the, वो दिखाया हुआ है यहाँ पे, carbonyl with displacement of O negative will take H positive back. तो OH negative उससे वापस ले लेगा. And we get what? Beta hydroxy aldol. तभी इसको ald. This is aldehyde and this is alcohol. Aldol. It is not name of scientist. It is name of the product. So we call it aldol. सिमिलरली अगर हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन में जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज एसिडिक इन नेचर, एंड बीइंग एसिडिक इट विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस स्ट्रॉन्ग बेस. OH नेगेटिव इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एंड दिस बॉन्ड इज सेट फ्री इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल, एंड इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, एंड वी गेट व्हाट? बीटा हाइड्रोक्सी. ये तो इसका यूबीसी नेम लिखा है, नंबरिंग आपने एंड से करनी है, 1 2 3 4 5. इस साइड से नंबरिंग क्यों करी? कार्बोनाइल ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट देन OH इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑर्डर ऑफ IUPAC. दिस कंपाउंड इज 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 पेंटेन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी. IUPAC नेम यू कैन राइट, वो आपको मैंने पहले समझाया हुआ है, बताया हुआ है. No, mechanism of aldol condensation already explained, but here we have explained it in detail. First step is, what is the first step? OH negative remove acidic hydrogen. OH negative क्या करेगा बच्चे? Acidic hydrogen को remove करेगा. Partial positive charge it is carrying because of minus effect of the carbonyl. Remove acidic hydrogen, and it result in formation of Rayonent's stabilized carbonyl. This is Rayonent N pi conjugation, N pi. Rayonent stabilized carbonyl. इसका Rayonent स्ट्रक्चर आ गया. Now this carbonyl, arrow थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया बच्चे. This carbonyl attack on carbonyl carbon. Carbonyl ने अटैक किया, ये एरो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया. मेरे जो मैं एरो दे रहा हूं उसको देखिए. Carbonyl carbon will attack here and we get this product. ये बनेगा CO negative, CH3 CR CO negative. और C के साथ कौन अटैच हुआ? CH2 COR. मैंने R लगा के शो किया, मतलब इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी. अगर H लगाते हैं इट इज एल्डिहाइड, अगर आप एल्काइल लगाते हैं इट इज कीटोन. अगेन द एरो हैज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर, सो O नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर. माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? OH नेगेटिव. H पॉजिटिव कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? वाटर से, एंड वी गेट द फाइनल इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोल जिसको बोलते हैं. ये फंक्शनल ग्रुप है. इसके साथ फर्स्ट कार्बन इज अल्फा, नेक्स्ट वन इज बीटा. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैनॉट अंडरगो एल्डोल कन्वर्शन. मुझे रीजन पता है व्हाई फॉर्मल्डिहाइड कैनॉट अंडरगो. क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एटम. अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा. फॉर्मल्डिहाइड में देयर इज नो अल्फा कार्बन, it cannot undergo. Benzaldehyde, there is alpha carbon, but there is no alpha hydrogen. This is benzaldehyde, this is alpha carbon, but there is no hydrogen here. Benzaldehyde and formaldehyde cannot undergo aldol condensation. Only those aldehydes which contain alpha hydrogen atom undergo aldol condensation, and when they undergo, then they are treated with, से treat करते बच्चे हम उनको, when they are treated with dilute alcohol. Now, dehydration of aldols. Product of aldol condensation when heated with dilute acid. जब हम aldol condensation की प्रोडक्ट को dilute acid से हीट करेंगे, एसिड क्या करेगा? प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल कर देगा. प्रोटोनेशन. ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव,
अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो H पॉजिटिव छोड़ या वाटर लॉस होगा और यहाँ से H निकलेगा। So ultimately what we get? We get alpha beta unsaturated aldehyde. So product of aldol condensation when heated with dilute acid undergo dehydration leading to formation of alpha beta unsaturated aldehydes and ketones. Mechanism of dehydration दिया हुआ है. First step is coordination of the OH group and second step is loss of water in the form of hydrogen ion. This goes from here. अब इस साइड आपसे एक क्वेश्चन है, इस साइड से क्यों निकलेगा? Why from this side? एक तो इस साइड से निकलने से बच्चे कंजुगेशन स्टेबिलिटी, तो दूसरा मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन, जितने मिथाइल ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मैटर्स पाई सिग्मा पाई, and moreover there is minus I effect on this CH from carbonyl group, which is making it acidic, which is making this bond polar. ये सारे फैक्टर फेवर करते इसी साइड से बॉन्ड निकलने. H इधर भी है, अदरवाइज इधर डबल बॉन्ड बन सकता था, इधर नहीं बना, इधर बना. प्रोडक्ट स्टेबिलिटी आल्सो मैटर्स पाई सिग्मा पाई. मेजिटाइल ऑक्साइड, अगर हम ये मैंने किसका लिया हो बच्चे? एसीटोन का एल्डोल लिया है. ये किसका है? एस्टल्डिहाइड का. एस्टल्डिहाइड का लेंगे तो बनेगा क्रोटल्डिहाइड, एसीटोन का लेंगे बनेगा मेजिटाइल ऑक्साइड. तो ये चीज याद रखें बच्चे कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन को एसिड्स के साथ हीट करते हैं, in that case there is dehydration and we get alpha beta unsaturated aldehyde or alpha beta unsaturated. Next we have one more point here discussed. Aldol condensation can also be catalyzed by acids. However, in such cases, aldols are not the final product. Aldol बनेगा but final product नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने देखा जब हम एसिड डालते हैं तो एल्डोल डिहाइड्रेट्स टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. इसमें जो एल्डोल बनेगा, बिकॉज कंडीशन इज एसिडिक, द एल्डोल फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेट्स टू गिव द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde or depending upon what you have taken as starting material. Aldol condensation can also be catalyzed by acids. However, in this case, aldol is not the final product. Aldol so formed loses water to give the alpha beta unsaturated aldehyde. बाकी mechanism to same. This is the mechanism. So we have crossed aldol condensation. Aldol condensation reaction between two different aldehydes and two different ketones, or between one aldehyde and one ketone, is called as crossed aldol condensation. ये देखिए दोनों एस्टल्डिहाइड इट इज नॉट क्रॉस्ड. एक साइड एस्टल्डिहाइड, एक साइड कोई और एल्डिहाइड, some other aldehyde, then it is called as crossed aldol condensation. If both carbonyl compound contain alpha hydrogen atom, then such condensation gives a mixture of four products. जैसे बच्चे बात करते हैं कि we take एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन, अगर हम इन दोनों का क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन करवाना चाहें क्या होगा? फोर प्रोडक्ट्स बनेंगे. कैसे? एस्टल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद एस्टल्डिहाइड, acetone can react with acetone because it also contain alpha hydrogen, it also contain alpha hydrogen. Acetaldehyde can act as nucleophile and attack on ketone. एक ने न्यूक्लियोफाइल का काम करना, एक ने इलेक्ट्रोफाइल का. ये देखिए इधर, तो acetaldehyde can act as nucleophile, it act as electrophile, एक प्रोडक्ट बन गई. Acetone can act as nucleophile, acetaldehyde can act as electrophile, एक और बन गई. मतलब फोर प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल. फिर इसकी कोई सिंथेटिक वैल्यू तो हुई नहीं, चार प्रोडक्ट्स बनेंगे, सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा. देन हाउ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज बेनिफिशियल? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज बेनिफिशियल ओनली इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन. अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो और एक के पास हो, इन दैट केस इट हैज ए सिंथेटिक वैल्यू. ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसमें स्टीरिक इंटरेस्ट भी नहीं है, इट विल अटैक ऑन इट. क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन आसानी से हो जाएगा. So if one of the carbonyl compound does not contain alpha hydrogen, जैसे formaldehyde, benzaldehyde है, then crossed aldol condensation is of synthetic. Let us elaborate further. For example, crossed aldol condensation discussed between formaldehyde and acetaldehyde in presence of dilute NaOH. Acetaldehyde
न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. How it act as nucleophile? OH negative remove H positive. Carbonyl generate होगा, then it attack on formaldehyde, and we get this. Then if heated, presence of acid, अगर heat करेंगे इसको, then it lose water to form this compound, acryldehyde जिसको कहते हैं, CH2 double bond CH. Cross aldol condensation between benzaldehyde and acetaldehyde, जिसको हम Claisen-Schmidt reaction भी कहते हैं. In this case, the initially formed aldol undergoes dehydration automatically. इसमें एसिड डालने की जरूरत नहीं पड़ती. Crossed aldol condensation between benzaldehyde and acetaldehyde, which is also called Claisen-Schmidt reaction condensation, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है that undergoes dehydration automatically. Now why? बाकी एल्डोल में हमें एसिड डालना पड़ा, हीट करना पड़ा, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिहाइड्रेशन क्यों है? Because of extended conjugation. Extended conjugation. अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ बच्चे आपको डिटेल में, ये देखिए बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए कितना कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई. एक्सटेंडेड कंजुगेशन. Standard. Product stability is the driving force. It is causing the dehydration. Condensation reaction between aromatic aldehyde or ketone with aliphatic aldehyde. Aromatic aldehyde or ketone, जैसे ये किया हमने, with aliphatic aldehyde, जैसे ये किया हमने, having alpha hydrogen is called Claisen-Schmidt reaction or simply Claisen reaction. Mechanism of Claisen-Schmidt condensation. Mechanism is same as aldol condensation, because here we are treating aromatic aldehyde or ketone with aliphatic aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom. The aliphatic aldehyde or ketone contain what? Alpha hydrogen, and it is acidic. Alpha hydrogen is acidic. It is removed by the base, thus forming carbonyl, which acting as nucleophile attack on carbonyl carbon, and we get this, which automatically dehydrates to alpha beta unsaturated aldehyde. मैंने पहले ही रीजन बता दिया कि क्लेजन रिएक्शन में जो आपका एल्डोल बना वो डिहाइड्रेट कर जाता ऑटोमेटिकली विदाउट एडिंग एसिड, बिकॉज द प्रोडक्ट इज स्टेबल. स्टैंडर्ड कंजुगेशन. Standard conjugation. The whole system is conjugated. So condensation reaction between aromatic aldehyde or ketone with aliphatic aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom is called Claisen-Schmidt condensation or simply Claisen reaction. बच्चे जो Claisen reaction है, that is same as aldol condensation. The only specification is it is a reaction of aromatic aldehydes or ketones with aliphatic aldehyde ketone which contain alpha hydrogen, and the product formed aldol automatically dehydrates to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone because of the stability of product due to extended conjugation. Very important. Thank you very much. So this was all about aldol condensation and Claisen reaction. This is my WhatsApp number. If you have any doubt regarding this video lecture, you may call me, WhatsApp me. Thank you very much.